Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you're watching Physics Corner. So in this video of application of CR equation, we are going to discuss the second one. As previously we have discussed the case one where real part is given and our aim is to find the imaginary part. But in the second case, if f of z is a function of a u plus iv, if v is known, that is the imaginary part, we know that our aim is to find the real part, that is the u. Now see method, we know that du equals to dou u by dou x into dx plus dou u by dou y into dy. Okay, now using CR equation, see, as you know we don't know u, that's why we have to replace these parts using CR equation. Now see, dou u by dou x is replaced by dou v by dou y and dou u by dou y is replaced by minus of dou v by dou x. Therefore equation 1 becomes equation 2. Now see, in equation 2 you can see that after the replacement. Now integrating this equation 2 on both sides, we get this. Okay, therefore integral of du is nothing but u. Then this is, as usual, we see in a differential equation, exact differential equation. See here, y should be constant because you have to differentiate with respect to dx, therefore y should be constant. And here we are differentiating with respect to dy, therefore यहाँ पे x की टर्म रहना ही नहीं चाहिए. अगर x की टर्म वहां पे अवेलेबल है तो वो इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, ओनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. Okay, any problem? This is the method. Now we have to see one problem to clear your doubts. Now see the problem. Given an analytic function f of z equals to u plus iv, where b is a given, that is the imaginary part, then our aim is to find the real part. Okay, तो देखिए imaginary part ले लिया हमने, अब हमको फाइंड आउट करना है रियल पार्ट. तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है du equals to dou by x dx plus dou by dou y into dy. Now replacing these parts using a CR equation, we got equation 2. Okay, no problem. अब देखिए यहाँ पे v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, यानी कि इक्वेशन 2 में हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हमने ये निकाल लिया. ओके, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर से v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया. नो प्रॉब्लम है यहाँ. अब देखिए, अब ये जो भी वैल्यूज हमने निकाली है इक्वेशन 1, तो dou v by dou y और dou v by dou x की जगह हमको ये पुट अप करना है. तो देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिकम्स. ओके, नो प्रॉब्लम. तो देखिए हम यहाँ तक आ गए. अब देखो क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड. ओके, इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रल ऑफ 2x plus 4 into dx. अब देखिए माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2y into dx. अब देखिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है dx. तो देखिए 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेट x dx. यहाँ पे फिर सेपरेट करने के बाद 4 भी क्या है कांस्टेंट, तो 4 भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी कि प्लस ऑफ 2 इंटू dy. ये माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ इंटीग्रल 2y dy. 2 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया इंटीग्रल ऑफ dy. यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया इंटीग्रल ऑफ y dy. अब देखिए आगे बस आ ही गए. तो देखिए इंटीग्रल ऑफ x इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 2. 4 इंटीग्रल ऑफ dx इज x 2 plus 2 integral of dy is nothing but y minus of 2 integral of y is nothing but with respect to y square by 2. 2 get cancelled, so what remains? X square plus 4x plus 2y minus of y square, and this is nothing but the u. Now see the this option is matching with this. You can see the option number 4 is matching, x square plus 4x minus of y square plus 2y. That's why the option 4 is the correct one. सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ मेथड फाइंड आउट करना है और निकालना है. तो देखिए दोनों भी केस इजी थे. अगले वीडियो से इसके ऊपर हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर.